बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। सो लेट ए कंडक्टिंग वायर स्ट्रेच, its length increase, area of cross section decrease, resistance increase, but volume will be remain constant. Suppose for a conducting wire before stretching its length is L1, area of cross section A1, radius R1 and diameter D1 as shown in the figure. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और ये कंडक्टिंग वायर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल की फॉर्म में है। इसकी इनिशियल लेंथ है हमारे पास L1, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला हमारे पास है A1, इसका डायमीटर D1 और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास है R1. The resistivity of this conducting wire which is rho. So the resistance of this conducting wire before stretching will be equal to R1 equal to rho L1 over A1. आफ्टर स्ट्रेचिंग अगर हम इस कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेच करें तो इसकी लेंथ बन जाएगी L2, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, डायमीटर D2 और रेडियस R2. So the resistance of this conducting wire after stretching will be R2 equal to rho multiplied by L2 over A2, where rho is the specific resistance as the resistivity of this conducting wire which is independent of stretching and compressing. Now dividing equation 2 by 1 we obtain R2 over R1 equal to L2 over L1 multiplied by A1 by A2. As volume of the conducting wire remain constant with stretching or compressing. याद रखिए हमने एज्यूम किया है हमारे पास जो कंडक्टिंग वायर है वो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है और सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. So the volume of this conducting wire will be remain constant. Before stretching, the volume of the conducting wire is cross sectional area A1 multiplied by L1, and after stretching, the volume of the conducting wire is the product of cross sectional area A2 multiplied by L2. Now rearrange this equation, we obtain equation number 4, which is equal to the ratio between area is equal to ratio between length. अब अगर हम equation number 3 में A1 by A2 की वैल्यू L2 by L1 पुट करें, so we obtain the ratio between resistance is equal to L2 by L1 whole square. इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर L2 by L1 की वैल्यू पुट करें A1 by A2, we obtain this one, ratio between resistance is equal to A1 by A2 whole square. Remember on equation number 5 resistance is directly proportional to square of its length. मीन्स हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है उसको हम स्ट्रेच करें तो इसकी जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ होगी. इस तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को देखें, यहाँ पर हमारे पास R2 है और यहाँ पर A2 है, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया आफ्टर स्ट्रेचिंग. नाउ ऑन द बेस ऑफ इक्वेशन नंबर 5 and 6, this is equation 5 and this is equation number 6, we discuss various cases. Case number 1, stretching of conducting wire means length will be increased. In case of stretching, length will be increased, which is equal to final length equal to n multiplied by L1, where L1 is length before stretching and n show स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेचिंग. हमने कंडक्टिंग वायर को कितने टाइम जो है उसको स्ट्रेच किया है. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 R2 by R1 इक्वल टू L2 और L1 होल स्क्वायर. अगर यहाँ पर हम L2 की वैल्यू पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1. फ्रॉम दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर की लेंथ इंक्रीज करें n टाइम बाय स्ट्रेचिंग तो इसकी जो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी वो हमारे पास n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगी. मीन्स अगर हम बाय स्ट्रेचिंग इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज करें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है 3 स्क्वायर उस 9 टाइम इंक्रीज होगी. एंड दिस कैन बी मेमोराइज बाय वेरी important shortcut.
It means by stitching length increase n times, resistance will be increased in square time. Now case number 2, by compressing a conducting wire, length will be decreased. In case of compression, length will be decreased. हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, उसको हमने कंप्रेस किया तो उसकी लेंथ हमारे पास डिक्रीज होगी. लेट हमारे पास जो इनिशियल लेंथ है कंडक्टिंग वायर की वो L1 है और उसको हमने कंप्रेस किया n टाइम्स, करेक्ट. उसकी जो फाइनल लेंथ होगी हमारे पास होगी L2. Now from equation number 5, this one, again putting the value of what L2, we obtain final resistance is equal to initial resistance divided by n square, where n show the strength of compression, और फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय n स्क्वायर. इसका मतलब ये हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है, उसकी हम कंप्रेस करें और उसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस कर जाए 2 टाइम्स, मीन हाफ हो जाए, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो रिड्यूस होगी कितनी 1/4 टाइम्स. दिस कैन बी मेमोराइज्ड बाय वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, दिस वन. इट मीन्स बाय कंप्रेसिंग लेंथ n टाइम्स, resistance will be decreased in square time. Now case number 3, stitching of conducting wire means cross section area decrease. In case of stitching, cross section area of the wire will be reduced, that is final area is equal to A1 over N, where N show the strength of compression. So the resistance R2 or final resistance or resistance after stitching from equation number 6 will be what this one. This is equation number 6. यहाँ पर हमने A2 की वैल्यू को पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करें, so we obtain final resistance R2 equal to n square R1 or n square R. So from this equation अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर को कंप्रेस करें तो उसका जो एरिया है, सॉरी स्ट्रेस करें तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर वो रिड्यूस कर जाए n टाइम, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी n स्क्वायर टाइम. So this can be memorized by very important shortcut, that is area will be decreased n time by stitching, resistance will be increased in square time. Now case number 4, stitching of conducting wire, radius or diameter will be decreased. हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, अगर उसको हम स्टिच करें तो उसका रेडियस भी डिक्रीज होगा और इसका डायमीटर भी डिक्रीज होगा. अब इसको हमने रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है. In case of stitching, radius or diameter will decrease. So from equation number 6 we know that R2 by R1 equal to A1 by A2 whole square. यहाँ पर हमने A1 की जगह पुट करना है pi R1 square और यहाँ पर A2 की जगह पुट करना है pi R2 square. So the ratio between resistance must be equal to R1 over R2 power 4. इसी तरह अगर हम R1 की जगह पुट करें D1 by 2, R2 की जगह पुट करें D2 by 2 और सिंप्लीफाई करें, so we obtain ratio between resistance is equal to D1 by 2 power 4. It means resistance variation with respect to radius and diameter is same. So from above equation we obtain the ratio between resistance is equal to ratio between radius of the conducting wire before stitching and after stitching power 4. So by stitching, if radius of a conducting wire by stitching reduced to n time, then putting the value R2 in this equation we obtain R2 by R1 equal to R1 divided by R1 divided by n, and simplify this we obtain R2 by R1 equal to n की power 4, or simply means the final resistance of a conducting wire after stitching is equal to n की power 4 multiplied by initial resistance of conducting wire before stitching. तो इसका मतलब ये है फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसको हम स्टिच करें और उसका रेडियस रिड्यूस कर जाए हाफ को, मीन्स आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी 2 power 4 और 16 टाइम टू द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर. Again, this can be memorized by a very important shortcut. It implies that radius of the or diameter reduced to 1 over n times by stitching, resistance will be increased in की power 4 times. Case number 5. In case of compression, conducting wire radius or diameter will be increased. So from equation number 5 we know this one, correct, or we also derive R2 by R1 is equal to R1 की power 4 divided by R2 की power 4.
हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसको हम कंप्रेस करें तो उसका जो रेडियस है इंक्रीज कर जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने एक कंडक्टिंग वायर को कंप्रेस किया, इसकी रेडियस इंक्रीज कर जाए सपोज n टाइम, सो व्हाट विल बी द वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। सो R2 by R1, यहाँ पर R1 एज इट इज R2 की जगह हम पुट करेंगे nR1। बाय सिंप्लीफाई दिस वी ऑब्टेन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इक्वल टू 1 by n की 4 मल्टीप्लाइड बाय R1। तो इसका मतलब ये हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसको हम कंप्रेस करें मिसाल के तौर पर 2 टाइम, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस कर जाएगा 1/2 मीन 1/16 टाइम। या हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसको हम कंप्रेस करें मीन्स उसकी रेडियस हम इंक्रीज करें 3 टाइम, यहाँ इनकी जगह 3 पुट करें, सो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज 1/81 टाइम। And again, this can be memorized by very important shortcut. This one, that radius or diameter increase n time by compression, resistance will be increased 1/n4 time. Now, on the basis of this theory, we discuss some important MCQs. MCQ number first: a conductor which length is L1, diameter D1, after stretching its length become L2, diameter D2, what will be the ratio of resistance before and after stretching। हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ है हमारे पास L1, इसका डायमीटर है हमारे पास D1, इसको हमने स्टिच किया और इसकी लेंथ बन गई L2 और इसकी जो डायमीटर बन गई हमारे पास D2। अब हमने सिंपल मालूम करना है R1 और R2 means ratio of resistance before and after stretching। So from our previous study we know that R2 by R1 equal to D1 की power 4 divided by D2 की power 4। By rearranging this we obtain the ratio of resistance before stretching and after stretching is equal to D2 power 4 divided by D1 power 4। MCQ number 2: if a 5% increase in length due to stretching, then the percentage increase in the resistance will be what? 5%, 25%, 7% or 10%. This problem can be solved by the help of a shortcut. After stretching, if the length of a conductor increased by x%, then the resistance will be increased by 2x%. But this shortcut will be used only if the percentage increase in length is less than 10%। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडक्टिंग वायर है उसके लेंथ में परसेंटेज इंक्रीज आया है 5%, so this is our x। So what will be the percentage increase in resistance, that is equal to 2x multiplied by percent। So यहाँ पर x की जगह हम 5 पुट करेंगे, so we obtain 10%। So the correct option is option number 4। MCQ number 3: the length of a given cylindrical wire is increased by 100%, means its length become double, n is equal to 2, due to the consequent decrease in the diameter, the change in the resistance of the wire will be what। हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ को हमने इंक्रीज किया 100%, मीन इसकी लेंथ को हमने डबल किया, सो आवर n is equal to 2। सो जाहिर बात है जब हम कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेच करें तो इसके डायमीटर में हमारे पास डिक्रीज आएगी। अब हमने मालूम करना है चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर बिफोर स्टिचिंग एंड आफ्टर स्टिचिंग। सो चेंज इन रेजिस्टेंस सिंपली डिफाइंड एज R2 minus R1, where R2 is the resistance of conducting wire after stitching। R2 equal to n square R1, यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे, so R2 equal to 4 R1। Now change in resistance defined as delta R equal to R2 minus R1, तो यहाँ पर हम R2 की वैल्यू पुट करेंगे, so change in resistance is equal to 3 R1। Now percentage change in resistance is equal to 3 R1, जो यहाँ पर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, so we obtain 300%। It means the change in resistance of conducting wire become 300% if we increase the length of the conducting wire by 100%। MCQ number 4: a conducting wire which initial area of cross section is 3 cm square, compressed such that the area of cross section increased by 3 times, then the new resistance of conducting wire will be what। हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है
जिसकी इनिशियल क्रॉस सेक्शन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसी कंडक्टिंग वायर को हम कंप्रेस करें तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा, और कितना इंक्रीज हो गया हमारे पास 3 टाइम्स। इट मीन्स area of cross section increased by 3 times. Then the new resistance of this conducting wire will be what? As resistance and cross section area are interconnected by the following equation. R is inversely proportional to A square. Means area increase n times, resistance will be decreased 1 over n square time. So the final resistance is equal to 1 by n square R. by यहाँ पर n की जगह हम 3 पुट करेंगे, so the final resistance will become R divided by 9. So it means the resistance will be decreased 1 over 9 times to the initial resistance if we compress the conducting wire such that its cross section area increased by 3 times. MCQ number 5. A wire of radius R has resistance capital R. If it is stitched to a wire of radius R by 2, then the resistance of the wire become will be what? हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आर है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है हमारे पास कैपिटल आर है। अब अगर हम इस कंडक्टिंग वायर को स्ट्रेच करें सच दैट इसकी जो रेडियस है वो रिड्यूस कर जाए, मीन हाफ बन जाए, दिस इज आवर एन। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर? दैट इज 2R, 4R, 16R or 0. So we know that if radius be reduced to 1 over n times, then the resistance will be increased n की power 4 times. So the final resistance of conducting wire after stitching is equal to n की power 4 multiplied by R1. यहाँ n की जगह हम पुट करेंगे 2. So the final resistance will become 16 times to its initial resistance. MCQ number 6. The resistance of a wire is 20 ohm. It is stretched such that the length become 3 times. Then the new resistance of the conducting wire will be what? हमारे पास एक conducting wire है जिसकी इनिशियल लेंथ L है और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास 20 ओम है। अगर इसको हम स्ट्रेच करें और इसके लेंथ में 3 टाइम इंक्रीज आ जाए तो न्यू रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? 6.67 ओम, 60 ओम, 120 ओम और 180 ओम. So we know that after stretching, if the length increased by n time, then the resistance will be increased by n square time, and this is discussed earlier. So यहाँ पर इनकी जगह हम 3 पुट करेंगे, so R2 equal to 3 power 2 means 9. So फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस. यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 20 ओम है. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 20, so it becomes 180 ohm. So the correct option is option 4. MCQ number 7. The resistance of a wire is capital R. If the length of the wire is double by stretching, then the new resistance will be what? So this can be solved by the help of a shortcut. उसको हमने already डिस्कस किया है. After stretching, if the length increase by n time, then the resistance will be increased in square time. तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास डबल हो गया, तो यहाँ पर हम इनकी जगह पुट करेंगे 2, so this become 4R1. So final resistance of the conducting wire become 4R1, this one. MCQ number 8. The resistance of a 5 centimeter long wire is 10 ohm. It is uniformly stretched such that its length become 20 centimeter, mean length increase 4 times. The resistance of the wire will be what? As the final resistance of conducting wire is equal to n square R1. So यहाँ पर इनकी जगह हम पुट करेंगे 4, क्योंकि हम लेंथ को इंक्रीज किया 4 टाइम. When we increase length n time, then the resistance will be increased in square time. So final resistance equal to 4 power 2, और 1 की जगह हम पुट करेंगे initial resistance, so this become 160 ohm. So the correct option is option 1. और हमारे पास जो लास्ट MCQs है वो ये है, a wire which initial resistance is 64 ohm is compressed such that its diameter increased by 3 times.
then the new resistance will be what? 1 ohm, 64 ohm, 4 ohm, or 16 ohm. So we know that R2 और R1 इक्वल टू D1 पावर 4 डिवाइड बाई D2 पावर 4. D1 हमारे पास इनिशियल डायमीटर है विच इज इक्वल टू D. D2 हमारे पास फाइनल डायमीटर है विच इज इक्वल टू 3D. तो यहाँ पर D2 की वैल्यू पुट करेंगे. सो R2 बाई R1 इक्वल टू 1/3 की पावर 4 और सिंपल R2 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई 181. बट इनिशियल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास बिफोर कंप्रेशन वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 64 ओम. तो यहाँ पर हम 64 को पुट करेंगे और यहाँ पर 81 से डिवाइड करेंगे. सो वी हैव 10.79 ओम which is equal to approximate equal to 1 ohm. So the correct option is will be what? The correct option is option number 1. And thanks for watching.